Okay, we're live. I will share the video link. Let us know if my audio and video everything is clear. Himanshu sir will be joining just in a bit. Just let us know audio, video, everything is clear or not. We'll check from here. Yeah, hi, hello. So we take these sessions every 2 weeks. So you guys can let us know your progress over the 2 weeks. What have you studied? Where are you stuck? We have also uploaded some guidance videos recently, right? So I hope you guys have watched those. Okay, let me share this. Okay, you're also watching professional. If I can study 3 hours a day, how? Uh, if you're just starting out your gate preparation, you should. So Nikhil has a very basic query that he's just starting out his preparation. He's a working professional. If you're just starting out, you first of all need to build up your fundamentals because you are currently doing job. So it might happen you're out of touch of the theoretical subjects. So you might have to start slow. Initially, it will take some time. Start off with a basic fundamental subject that is either network theory, signal system, or any subject that does not require any prerequisite. Then slowly you build up the pace. Like we have already made a video. You can watch that video. Gate preparation strategy for working professional. You can go and watch the video in this YouTube channel. That video is already present. Uh, get 2027 all subjects. If you have, can you tell me your any other options? Do you have any other options? Let me quickly turn on the slow mode. Otherwise, people will just keep on spamming. Let me turn on the slow mode. Okay, just give me 1 second, guys. Uh, yeah, slow mode is on. Yeah, sorry. Yeah, let me take you guys query. Sir, I finished digital, haven't done PY because I finished network basis from PrepFusion. I'm slow. My private session. So initially things will be slow, but you have to pick up the pace at a certain stage. Once you're comfortable, you can go fast. So if you're finished digital, then complete the PY course, right? And try to do stuff in parallel. You have same break right now or whatever, same break or anything, right? So try to, like, you have to slowly increase. Initially it will be slow, that's fine, but once you get habitual, the speed will come automatically because you will understand the concepts much faster. Your brain also will develop the thinking ability, right? So you will build up the pace. So network basics is done. So to try to target at least finishing till transient within the next 2 weeks, and also try to target the PYQs, completing the PYQs. As I have completed signals, now I have completed intently writing again. Should I go to communication next or complete circuit? Which are strong area? Maybe you can focus on your weak area right now. Uh, like communication. If communication is your weak area, then focus on that. Strong areas, you can just practice the gateway because you can revise obviously. If you don't analog, also you might need to revise very little stuff, not everything. Like few things you are forgetting, revise those things, and you can solve the gateway because you can buy test series from any other coaching, and then you can continue your preparation.
Okay, I've completed communication till information theory revised. Yeah, that's great. That's great because communication, anyways, uh, like knowledge of signals will be required. So it's a good progress. Okay. Uh, I got RF and microwave. I think if we don't have any other option, then I think you have to go with this IIT Kanpur RF and microwave. I don't think NIT Warangal AI is not that great. I think option. I think this is the only one that I see. If the choice is between these two, then yes, and IIT RF and microwave. Margin stability, stability, poles. Yeah, Kadambi, it is stored. So stability is stored in signals and system as well in poles and zeros like in Laplace transform. Also, we have taught this in control system stability um, in the time response chapter and as well as in the first chapter as well, where we discuss pole zero location of pole zero, right? So signals, Laplace, and control basics. We have taught this. Yeah, once you get into ISC, your consistency will automatically be maintained because there will be so much pressure on you. So it will be automatically maintained. So don't worry about it. Once you get into ISC, it will be automatically maintained. Okay. Hello, sir. I'm Satya here. I am going to pursue BTech this year. I'm going to start my equipment also. Yeah. So if you're just about to start your gate preparation, you can just recently Himanshu sir just made a video. Just search gate preparation strategy by Himanshu Agarwal. Like there will be a video which will for all students, for college going students, for professional working professional. That video is there. You can watch your part. Mostly the crux is you shall start with network theory. If you are really weak in mathematics, you can start with engineering mathematics as well. It depends, right? If you're just starting out. So I can come with digital network only DC. Can I get? I don't know how many subjects you will be able to complete, but if you stay till the end, you will certainly get a good rank. And recently, Himanshu sir will upload a video, 7 months preparation strategy. Stay tuned for that. Within the next 2 to 3 days, that video will come out, so you can watch that video. I'm doing digital and network. Next, I will do signal. When to start the test? So uh, you shall start the tests after you're done with the PYQs, right? So for digital network, if you're doing digital network, so once you complete digital and network, then you do the PYQs. After that, you start with the test series. You should not start test series directly. And full subject test series will come much later, around December or so. Okay, December. Yeah, Rahul, if you're not able to solve questions, even if you have watched all the lectures of our network theory, then unfortunately, maybe your frequency is not matching with us, then you have to watch from some other resource, or maybe you have to work on yourself. Why are you not able to solve it, right? You have to think about it because a lot of people have studied it. If out of 100, 90 people are able to solve it and you're not able to solve it, either you have to change the educator because your frequency is not matching, or you have to work more hard on yourself. It's just how it is. You have to work more hard on yourself. Sir, I completed control network analog DC along with most of the PIQs. I started signals now and basics are done. Is my preparation speed okay? Yeah, it's great. If you're done with the PIQs, make sure you are doing the test series as well and make sure you are revising the subjects as well. Okay, that is very important. Revision is very important. Right? Your pace is good. Your speed is good. भाई पप्पू ठीक है वो उसने ज्यादा मैंने उसको बोला था मीडियम काटने के लिए ठीक है उसने ज्यादा काट दिया फिर काटने के बाद पता चल रहा है बहुत ज्यादा काट दिया उसने ठीक है क्या ही बोले बहुत ही घटिया बार था वो नो 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 जील मॉडल 2 will not come
YouTube. Uh, Look, the thing is, in YouTube, few things are present, but complete content is not present. So if you want to have the complete content, you have to buy the course. You can study from YouTube as well. You have to just search for resources, and like it will not be totally aligned in a structured manner, right? And how do you manage the time? You have to, unfortunately, you have to manage the time somehow. You will have your project work as well in ISC. At night you have to manage, in weekends you have to manage. Everyone does that, so you will also have to manage that. So Ayush, if you're just starting out your gate preparation, don't think about days right now, because you are gate 2028 aspirant. You have a lot of time. Study in a good manner. Once you finish one subject, or once you finish two chapters or three chapters, then you analyze, okay, this is the amount of time I'm taking. Then I can comment, okay, then I will comment generally how much time it will take for you, right? In general, network theory, it will take, like, for a new student, it will take maximum 1.5 months. Okay, maximum 1.5 months. यार अनीश, ये अपने वाले स्पीकर का नाम क्या है? अब क्या दिख रहा होगा ना स्पीकर का नाम? डीजे माइक नहीं, माइक्रोफोन बोल रहा है तू? डीजे यार, ये फिर नहीं कनेक्ट हुआ यार, क्या बता इसे क्या है? यहाँ पे रिसीवर में दिख रहा है, हाँ ठीक हाँ, है, उसमें ये लो है, उसमें यहाँ क्या पे है भी उसमें? सही है, नहीं यहाँ पे भी हाँ सही है, ग्रीन हाँ, लाइट है, सही है, सही है। या फिर कनेक्ट नहीं हुआ इसमें? वो लगा है क्या, यूएसबी वाला कुछ लगा है क्या उसमें, या नहीं है? और उसको लगा है, हाँ अब लगा है ना, अब आ गया होगा। नहीं है, वो कुछ डिस्कनेक्ट नहीं है। इसके अंदर, इसके पीछे में एक वो था, मैग्नेटिक जैसा था ना, जो मोबाइल में जब कनेक्ट करता है, तू उसको हटा दिया ना, पीछे में पिछवाड़े में था एक, हाँ हाँ हाँ, हटा दिया। तब नहीं पता, ठीक है, जाने दे। डिस्क्रित भाई दोनों से पढ़ लो, दोनों बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है। Is it feasible to secure admission to a top 7 IIT for MS in VLSI, preparing only 6 subjects? I am aiming for IIT-M PhD studying. No, only 6 subjects, it will not be possible. Okay, you need to cover the full syllabus. As of now, don't think of 6 subjects. It might be possible if in the 6, in all the 6 subjects, if you are able to score 100% of the marks. But do you really think that in all the 6 subjects you will be able to score 100% of the marks? So let's be realistic. We need to cover 7 to 8 full subjects, and 2 or 3 subjects if we are left with. Then what we will do? We will cover from crash courses, or we will just cover some important topics. But only 6 subjects I will do, sir. I will not even touch the rest 4 to 5 subjects, and I will go in the examination hall. I will be able to perform well. That is an unrealistic scenario. Okay. देखो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक नेक्स्ट 2 वीक्स, इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आई विल अनाउंस समथिंग। मैं शेड्यूल थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा। नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद आई थिंक डायोड सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, इतना गारंटीड है। नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद क्या? हाँ ठीक है, कहाँ रिव्यू से तो लेनी करना है। इंक्वायरी, मतलब? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रिव्यू तो कहाँ करना से? है। कहाँ से वो स्टार्ट है ये जहाँ से इसने मेरे को हेलो सीधा इंडिया देखे बता। ना, हेलो इंडिया ये वाला, हेलो इंडिया 6/14 6:14 PM। 6/14 पे हेलो इंडिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ विराज गायकवाड, एक एक करके करते हैं फिर, ठीक है। वो तो CS का था। रिपीट अच्छा, करके सी उसको एस ई बोल। एम पी रिमेनिंग, सी एस मतलब कंट्रोल सिस्टम है, अच्छा कंट्रोल सिस्टम बोल रहा है, अच्छा अच्छा। सी एस इलेक्ट्रिकल मशीन हाँ हाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल, रिमेनिंग, कैन आई स्टिल मेक इट ए या अंडर हाँ 10? you have enough time, you have enough time right now, you can। तो सर की तो आने दो पहले, ए अंडर 10 है, फिर आप बताएं, फिर सर बताएंगे ना। यहाँ दोनों टीचर की कभी नहीं है ए अंडर 10, हम क्या गाइड करेंगे? अरे पहले सर तो की तो आने दो, ए अंडर 10। ऐसा तो नहीं ए होता है तो। अंडर 10 किसकी आएगी कोई नहीं बता सकता, ठीक है। हाँ वही, इज इट, उसने पूछा कैन आई मेक इट, हाँ यू कैन स्टिल मेक इट, मतलब दैट्स माय आंसर, यू कैन मेक इट, एनीवन कैन मेक इट, मतलब देयर इज नो डाउट, एनीवन कैन डू इट। ये क्या था, आई हैव कंप्लीटेड है। मतलब you don't need to hurry, you have a lot of time, you can take your time, मतलब if you're considering like okay I will revise everything in a single month, your speed is good but you don't need to hurry right now, we have a lot of time, so you can revise slowly, you can attempt more test series,
go thoroughly, right? So I'm getting the password. Then I was preparing for UPSC. If get and go for MTech, will there be issues? No, there will not be any issues in age and gap. अरे ये हिमांशु यूपीएससी में कुछ वो कर रहे हैं क्या? मतलब क्या 2 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं क्या? मतलब कुछ कहीं तो देखा था मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है। यूपीएससी ईएससी में ईएससी में नहीं शायद यूपीएससी इंजीनियरिंग वाला सर्विसेज। नहीं जो I am 2020 pass out that then was preparing for कर UPSC. Can दिया I बोल give दिया gate and go बोल दिया बोल दिया issues? हो गया उसका Yeah, there will not be any issue for your for your बोल दिया। uh, How can I? There will be video. Himanshu sir will recently upload a video. You can watch that. 8 subjects in 6 months. But Agya Pratap, as far as I remember, you are preparing from last year, no? So how you are left with eight subjects? I guess you are done with more than 2 subjects. Signals and communication only 2 subjects if you are done with. So let's get started with the network analysis now. Okay, Agya Pratap, let's get started with network analysis. Okay, network analysis you get started with. जसकीरत भाई आप कहीं से पढ़ लो यार, ठीक है, बार बार क्वेरी रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। दोनों टीचर से ही पढ़ लो, आप दोनों से ही पढ़ना पड़ेगा आपको। एक से पढ़ोगे उसके बाद दोनों से भी पढ़ना ही पड़ेगा। हाई रिपीट मतलब मैं स्लो मोड ऑन किया हूँ, ठीक है, स्लो मोड ऑन किया हूँ तो एवरी 60 सेकंड बाद फिर भी वो 60 सेकंड बाद फिर से हर 60 सेकंड बाद वो पढ़ रहे हैं। वो जसकीरत भाई मेरे मजे लेने की ट्राई कर रहे हैं थोड़े से। दोनों से पढ़ लो भाई, आप रैम तक में मेरे से पढ़ लेना, ठीक है। अभी आप दोनों से पढ़ लो। I have completed SNS NT analog electronics and I have completed EDCD before। ये हो गया ना मेरे ख्याल से? ये हो गया। रिपीट मत करो यार। Sir, last time I had done 3-4 opens lecture. Now it's completely finished. Maths is up to date and revised. And look till MOSFETs revised. Maths still differential. Yeah, Nandish, you are doing well. From the last 5 to 6 session, you are doing absolutely well. Okay, no need to worry about anything. Keep on performing in the same manner. Sir, GATE 2026 electrical 471, can I get NTPC? NTPC not possible. NTPC का कट ऑफ काफी ऊपर जा रहा है यार, इस बार ऊपर आया, काफी नहीं आएगा 471। अच्छा, it is the rank or score? If it is the rank, then it is possible. Okay, 471 rank is there, no, then NTPC might be possible. I have completed SNS. Yeah, sir, it takes me 4 hours to complete 2 hours of lecture as I make notes simultaneously and pause in between. Look, the way to increase the pace would be that you need to stop making your own notes. You need to refer to the printable notes. What I mean by printable notes, these are the printable notes. This is the printable notes. Okay, so refer to the printable notes. So print out, get the printout. Neatly written printout are there, right? So get the printout and study from it. Along with that, whatever the time is left, utilize that particular time in problem solving. Otherwise, you will keep on making the notes, right? If you are having 2-3 years for preparation, then I would say make your own notes. But if you are not having that much of time, you are having limited time, then you cannot proceed with making your own notes. NPCIL waitlist position 1 in electronics, any chances based on your experience? सर नहीं यार, आइडिया नहीं है, ठीक है, ये आप किसी से लिंक्डइन पे पूछो यार, मेरे को आइडिया नहीं है यार, ठीक है। नेटवर्क कर लिया था पर अभी आपके टेस्ट से डायरेक्टली एलसी सर्किट में करंट लिख रहे, लुक रियली ग्रेट। तो ये वाला अपने लेक्चर में बताया ना, लेक्चर में बताया यार कि कैसे डायरेक्टली करंट लिखना है, ठीक है। वो एक टेक्निक है, उसमें कुछ इंट्यूशन नहीं है। तो ग्रेट चीजें तो और भी है ना, ट्रांजेंट की वो टेस्ट दो, ठीक है, उसमें काफी बढ़िया चीजें मिलेगी। वो तो एक टेक्निक है ना, उसमें तो कुछ ऐसा खास कुछ है नहीं उसमें। वो एक तरह की टेक्निक है कि ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी वो ट्रांजेंट के सवाल भी काफी अच्छे हैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है। ये करंटली आई एम लर्निंग डिजिटल फ्रॉम प्रेपरेशन बट समटाइम्स आई एम गेटिंग डिमोटिवेटेड। आई एम consistent on Delhi, but sometimes I take a half a day to cover 1 hour of lecture. Any suggestion? Hopefully you are not making your own notes, Hemant. Okay, hopefully you are not making your own notes, so you need to avoid making your own notes, right? Because if you make your own notes, then it will take a lot of time. So sometimes it may happen that if a lecture is tough, let's just say you are just getting started with sequential circuits, so in the initial part of the sequential circuit, tough things would come up, right? So these things might be there, tougher things might be there in the initial part of the lectures, but with the like slowly the things will happen. So 1-2 rough days could be there, 1 or 2 rough days could be there. No need to worry about it. Okay, अपने 620 पे आ गए हैं, 6:20 पे आ गए हैं। MSR इन NIT के यहाँ पे निखित का कमेंट है। यहाँ से अपने अरे 3-4 ये वाला तो हो गया ना, इस नंदीश का 3-4 ओपन लेक्चर्स या नहीं हुआ, इसका हो गया ना ये वाला नंदीश। हाँ, नंदीश का हो गया। आगे ये राहुल का है कमेंट, इसको प्रेजेंट मत करना, नाम लिखा है यहाँ पे।
My teacher took less number of example in lecture. Now I come from network questions. Then I feel I haven't seen a question like this. I study from him. Should I stick? देखो ट्रांजेंट तो वापस कर लो भाई, वरना इस बार फिर पेपर हिलेगा नहीं। देखो ठीक है, मैं पहले बता, ट्रांजेंट वगैरह कर लो यार, ठीक है। और अनीश सर ने जो ट्रांजेंट पढ़ाया, देखो यहीं पे कमेंट आया, देखो कि अंडररेटेड, दैट इज वेरी वेरी अंडररेटेड। अलग तरह से पढ़ाया गया, वो बहुत ही अलग तरह से पढ़ाया गया, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो उससे कंपेयर करना तो मैं मतलब कंपैरिजन कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। आप उसको खराब कह सकते हो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कंटेंट को आप खराब कहो, बट कंपेरेबल मत करना कभी भी, ठीक है। हमें कंपेयर नहीं होना है। तो वो कर लिए, बहुत अलग तरह पे पढ़ाया गया, तो यार वो वाला पढ़ लो, ठीक है। वो पढ़ो आप, जैसे राहुल, आपको मैं कहूंगा कि आप वो एटलीस्ट ट्रांजेंट वाला पार्ट पढ़ लो, फिर जाके वो ट्रांजेंट वाला नेटवर्क के पढ़ लो। सवाल ठीक है। वरना आप लास्ट ईयर का एक नेटवर्क का सवाल आया ट्रांजेंट का, वो करने का ट्राई करो। लोग उसे आज तक एमटी कहते हैं, ठीक है। तो वो वाला भी ट्राई कर सकते हो सवाल। तो आप एरोगेंट, हम एरोगेंट नहीं हो रहे यहाँ पे, बट इफ वी बी एरोगेंट आई गेस इट इज फाइन। लेकिन एरोगेंट नहीं हो रहे, हम बता रहे हैं, सही तरह से बता रहे हैं कि चीजें थोड़े बेटर वे में पढ़ी जानी चाहिए, तो अपन को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे ये बता रहे हैं कि एलसी का वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा था, वो बात ठीक है, बट और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं नेटवर्क में जो स्टूडेंट्स को लगती है अच्छा नेटवर्क तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बट नेटवर्क इतना ईजी होता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये है यूपीएससी सीएससी में अगर ग्रेड ए सर्विस अगर मिल गया है तो मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स, अदरवाइज गो फॉर मैक्सिमम अलाउड अटेम्प्ट। I have bought your paid course. I have already completed lectures from him. I'm left with the EDC, analog, com, and EMFT. I have to revise and practice rest that I have completed. Strategy for me, like, yeah, whatever the strategy you have thought, that is fine. Okay, you have completed the subjects. Just revise those. Whichever the subject you have completed, try writing the test series of that particular subject, and after that you revise. You cover your first. You get started with the EDC. Okay, then you cover. Are you left with analog or communication or analog communication? You have written analog communication. So I'm not sure whether you are saying analog communication or analog electronics. So if you are left with analog electronics, then first cover analog, then cover communication, then EDC, then EMFT. This could be your flow. Okay. Yeah, Graph graph theory, theory is not there. Graph theory is not there yeah, in the it syllabus. is not there. It is not in gate examination. In my third year concentration, all chapter in my first attempt during the fourth year concentration on project is best option or focusing only on 8-9. If you feel like that, sir, in the third year attempt, I will be able to cover all the syllabus, then you should go with it. But if you feel like that you will not be able to cover it, then don't go for it. As of now, if you are at level 0 and you are saying that, sir, I will cover 10 subjects, then this is something I will not recommend. If you are at level 0 as of now, I would say that you cover 5 to 6 subjects in a comprehensive manner. Then in fourth year, you cover all 10 subjects. Along with that, you will get good enough time for your projects as well. Don't worry about it. And in BTech, you cannot make anything productive. No productive projects you will be able to make, no matter how much you try. Is that clear to you? So projects and all, Especially these are, yes, Anish sir. for EC domain, basically for EC electrical domain, you literally cannot do anything. You need the infrastructure, you need the lab. We don't have it basically. Our colleges don't Yeah, have it. in best of the best college, I'm telling. In best of the best college, we are not having good enough infrastructure, so you will not be able to make anything productive. So I would say that you focus on gate examination, but if you are at level 0, then try covering 4 to 5 subjects, and then in the next attempt, try covering all 10 to 11 subjects. This is how you should proceed with. Sir is doing अरे भाई, while preparing I can control this natural thing. Should I stop or no? अरे ठीक है भाई, इन सब चीजों में इतना ध्यान मत दो, जो हो गया वो हो गया, ठीक है ना। जो हो गया वो हो गया, इतना ध्यान मत दो। व्हाइट डेविल, ठीक है, आपने नाम भी व्हाइट डेविल रखा है, ठीक है। मैं Very कैंसिल नहीं होना conscious. चाहता, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। Like we are not making fun, okay? It is natural thing. You are asking it. Natural It is होता है, fine, हाँ, okay? ठीक है. Okay. So whatever that has happened हो गया बस, ठीक है, और कुछ नहीं सोचना। उसके बाद तो वो क्लैरिटी आती है ना लाइफ में, उस क्लैरिटी पे काम करो, So I'm ठीक है। very बाकी मेरे confused. पास जोक्स वगैरह है, वो मैं होल्ड कर नहीं रहा हूँ नहीं क्योंकि नहीं मैं कैंसिल। सर, आज नहीं, हाँ, आज ठीक है जोक्स ठीक है नहीं सर. ठीक है, वैसे भी लोग बैन हो जा रहे हैं आजकल तो. चीज हो रहा है हाँ ठीक लोगों है। का. सर आई एम वेरी कंफ्यूज ऑफ चूजिंग बिटवीन बीएससी और टेक फॉर इंटर्नशिप प्लेसमेंट एंड थर्ड ईयर स्टार्ट. इट्स आई बॉट अच्छा. By tech, if you mean like IT, it's very simple. Like you start studying, right? If you feel interested, then you go into this domain. If you don't feel interested, then you go into IT. Like if you are studying both subjects and still you don't know what you're doing, like still you're confused, I will tell choose IT, because EC Yeah, is like, if you're sure about EC, then only go for EC.
Otherwise, if you're Yeah. not sure, then go for IT. But why is that so? Because if you fail in EC, let's just say if you fail in EC, then you would be saying, sir, what if I had gone for IT? Then you would be saying, sir, I should have chosen IIT. If you fail in EC, but if you fail in IT, then you would never say, sir, what if I would have gone to EC? Then people would say that if you are failing in IT, if you have gone for EC, then forget about it. Don't even think, because the IT 10 people are doing, no, sorry, 20 people are doing IT, then one person is doing EC. Okay, so if you are confused between IT and EC, if you feel like that, sir, should I go for EC or VLSI, whatever you are saying, should I go for VLSI or should I go for IT? And you are thinking that, sir, I'm at the same level in both of them, then go for IT. We are EC people, we are VLSI people, still we are saying that you should go for IT, because you will never regret if you go for IT, right? You will not think that, sir, what if I would have gone for EC, I would have done better. Yeah, the thing What are your EC is thoughts on generally a bit opting? difficult. Huh, good. Yeah, it is a bit difficult. Yeah. What's your thought on IIT MS? This program is discontinued now. Okay, TI IIT MS program is discontinued. It is not there. Yeah, that is possible. Okay, it is possible. MS SSD this year, like our student having 530 score, he got the opportunity. He gave a very good interview, although. Okay, he was a very consistent student. He was having roughly around 536 score, as far as I remember. He has got a seat in IIT Bombay MS SSD RA. And for I guess IIT Bombay ICS RA as well, the cutoff was roughly around 560 or 570 score only. I don't remember the exact cutoff. So you will get the interview goal. Rest everything would depend on how you perform in the interview. Okay. I'm preparing from EC, preparing for GATE, EC, and IN, where I can learn. Yeah, I think you messaged me in WhatsApp as well. So I will not recommend you preparing for that separately. That's it. Okay. Prepare for GATE ECA and only for those two subjects, don't prepare it separately. Prepare GATE EE measurements, that is enough. Okay. Yeah, we will do it topic wise. Okay. In analog, once you are done with the diode circuit, no, you can do the PYQs. Then you are done with MOSFETs, you can do the PYQs. Then you are done with op-amp, you can do the PYQs. And when you are done with VGT, you can do all the PYQs. So topic wise, we will do in analog. In network analysis, we used to do after the DC part, right? Once DC part is completed, then we used to do the PYQs. But in analog, we will go topic wise. Okay. BL recruitment, no idea. Sir, I'm solving EC tests, I'm making errors. How do I increase my marks? If you keep on making the errors, then eventually your marks will increase. Slowly your marks will increase. There is no technique. If you want to know the technique, how to analyze the test series performance, then you go to YouTube and type test series queries by PrepFusion. So there is a video where I have talked about complete test series, that how to utilize the test series in the best possible manner and how to analyze the test series. Okay. ये NTPC वाली हुई गई. I'm not able to maintain consistency even in these holidays. I go to college and in 6 months internship consistency कैसे maintain करे? Provided my branch is interdisciplinary. So how do you manage the consistency, sir? You tell how you are consistent enough, because I am not consistent nowadays. You tell. नहीं सर, आप तो मैं नहीं हूँ कंसिस्टेंट. लुक, नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल. वापस से मैं तेरी मेरे उस तबीयत एरा में ठीक आ गया हूँ. कब से था भाई? तेरी तबीयत ठीक कब से था, ये बता मेरे को. ठीक है. नहीं अभी कुछ समय ठीक चल रही थी यार, बढ़िया सही चल रही थी. लो बढ़िया जिम बना कर हुआ है, रहा था क्रिकेट ना, वगैरह भी जिम कर रहा क्रिकेट था वगैरह भी ना. खेला. जिम तो कभी बंद हुआ यार, जिम तो कभी बंद हो गया वापस. हाँ, वही 2 बोल दिन ही रहा हूँ चला ना. था. हाँ. हाँ, तो look, for having the consistency you need to have some motivation. ठीक है, कि you need to have an end goal and you are working towards the end goal. So whenever you have that like visualization in your mind that I have reached to this end goal and I need to do this, so then automatically the consistency will come. Okay, so it's not like something magic or something, and motivation will not come daily. You need to have an end goal, you need to work towards it, and automatically it will come. Although I am Okay, also not able Santosh. to maintain the consistency. You have completed the full syllabus, but you are diverted doing revision is the most boring part. Revision is a boring part, but I'm not sure how you have done the full syllabus. Okay, if you have done the full syllabus, then keep on writing the test series. Okay, just keep on working on your weak areas. Just keep on solving the problems. I know revision is a boring process. There you feel like that, sir, I already know everything. I don't know why I'm revising the notes. It is surely a boring process. Just keep on solving the problems. Okay, and once you solve the problems, you will get to know some new concepts are also there which you might need to learn. So in that manner, your learning would go on. If you have completed the syllabus as of now, then you are having very good chance of getting under 100 rank, right? Yeah. So backup plans are there, but first
let's appear for GATE examination, no? Then we will think of backup plans like PGWE, BITS examination. These examinations are there. You can surely do well in these examination, but let's first focus on GATE examination. Network yeah, as sir mentioned previously, you can study from printable notes if your institute provides it. That will save you some time. And if you have completed the other subjects, make sure you're revising it. Also, control you have not done the practice, so you can solve the GATE POI quiz, and after that you can attempt test series. हाँ ककाशी हाँ तो कर ले Sir, I'm done with the EMFT first. I can make a question, sir, and maths done now. I'm doing networks and SNS in this month. Will I be able to complete other subject, and which subject I should start next? I'm doing networks and SNS this month. So yeah, you after doing a network and SNS, you can get started with communication next. Okay, and you will be able to cover the syllabus. You can get in touch with them. Okay, they should provide the printable notes. If they are saying that we are giving you the notes, then they should give the notes. No, you can get in touch with the team, and you can ask them where is the notes. Okay, they will give you the notes. This Alvin query is completed, already answered. This query is also answered. This query is also answered. I am currently studying analog from your course, falling through IQs during this time. Yeah, this is also answered. Namitish EDC from Anshu sir is another level. I completed last one. I can revise very easily. Yeah, without remembering the formula. But there are a lot of good educator in EDC. They will make you remember the formula. I should be a better educator यार कि मेरे को थोड़े words अपने सुधारने पड़ेंगे. There was no point, right? I should not have said that thing, right? What do you say, Anisha? There was no point of bringing something else. Yeah, thank you for the appreciation, Amitesh. I should have simply taken the appreciation. Why one need to take down others things when someone is appreciating you? लेकिन उनका फिर से कोई कमेंट मेरे को दिख गया तो फिर मेरे से इसलिए इसके दिमाग में वही चल रहा है ठीक है वो उनका कुछ ना कुछ उनको टाइम टू टाइम का कुछ ना कुछ आता ही रहता है यार क्या करें अब छोड़ो कोई नहीं thank you for the appreciation Amitesh. I should not be talking about other things. Yeah, I should be a better human being. I will try to be. I should not be taking all these things. They will keep on saying. Yeah. So yeah, thank you for the appreciation, Amitesh. But keep on revising EDC, okay? No matter from wherever you have studied, if you don't revise EDC, it will feel like a new subject. Okay, so always keep on revising EDC and keep on solving the problems. Otherwise, it will feel like a new subject only. I have completed only one subject till now and feeling demotivated. What should I do now? No need to feel demotivated. One subject you have completed, 9 subjects are left. Try to do the maximum subjects. If you feel demotivated, then it will not help you. No, feeling demotivated doesn't help you in anything, right? I will able to answer this point. So just try to cover maximum portion. Today also I will upload at 7 p.m. only. I will upload a video of next 200 days preparation strategy. Okay, that video I will upload. So you can watch that particular video. सर हाँ ये सेम है भाई द बोस सेम है वो सेम है ठीक है सेम है हाउ टू स्टडी मशीन स्टॉप हो रहा लेकिन भाई ये तो डेली कोई ना कोई एक तो डाउट निकाल ही देता है अपने टेलीग्राम अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में कोई कुछ ना कुछ तो अच्छी अरे गलतियां सिर्फ निकाल ही मेरे देता है थोड़े मेरी गलती है तेरे हाँ? कुछ क्वेश्चन में भी गेट की गलतियां भी निकाल देता है गेट में ये मैथ ऐसा क्या सवाल दिया है हाँ तो यही फिर मेरी गलती शाहिद को नेक्स्ट ईयर अपने ऐसा ही रख लेंगे हाँ हाँ वो तो प्लान है लेकिन रैंक लेके आनी पड़ेगी शाहिद भाई पहले रैंक लेके आनी पड़ेगी फिर ऐसा ही रखेंगे हम लोग कहते हैं रैंक मैटर नहीं करती मैटर कर जाती है ठीक है ठीक है ही इज वेरी गुड एज फार एज आई हैव सीन बट एक ही सब्जेक्ट में अभी तक मशीन्स में आज थोड़ा डांटता हूं इसको नहीं पावर सिस्टम कर दिया पावर सिस्टम स्टार्ट कर दिया हो गया अच्छा कर दिया गया ठीक है हाँ कर रहा है ऑलरेडी बोल दिया मैं उसको सर ये हो गया क्या ये वाला या नहीं हुआ अरे फर्स्ट ईयर है भाई अच्छा सॉरी इनका हो गया हाँ ये वाला हो गया ये वाला हो गया ये अब ये क्या कर रही है भाई अभी तो ज्वाइन तो करो यार आप ठीक है ज्वाइन करो ना अभी फर्स्ट ईयर में जाओगे अभी आप जेई दिया आपने ज्वाइन करो कुछ नहीं है कंपटीशन वगैरह इंक्रीज हो रहा है कोई पढ़ता नहीं ढंग से केवल सबको लग रहा है इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन
इंक्रीज करने वाले आने तो चाहिए ना, पहले ढंग से तो पढ़े, कोई नहीं पढ़ता ढंग से ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो कोई नहीं, फर्स्ट ईयर में वो भी जाओ, पहले एक्सप्लोर करो। फर्स्ट ईयर के लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है कि हाउ टू स्टडी फर्स्ट ईयर के लिए, नहीं मतलब वो एक्सप्लोर करोगे ना कॉलेज लाइफ, तो कैसे एक्सप्लोर करनी होती है कॉलेज लाइफ, वो मैंने वीडियो अपलोड की है, वो देख सकते हो। स्टैंडर्ड बुक फॉर डीएलडी मॉरिस मनो, या इट इज स्टैंडर्ड बुक। आई प्लान टू स्टडी मेजरमेंट सेंसर, ये बता दिया ना, सेंसर एंड हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन एवरी संडे। वो बोल दी रूट मैप से तो नहीं या करना है। टोनी इट इज फाइन, ओके, इट इज फाइन, व्हाट यू आर प्लानिंग दैट इज फाइन, ओके टोनी, इट इज फाइन। सुधांशु की क्वेरी आंसर हो गई है। स्लू दिया हो तो हाँ कॉम्प्लेक्स हो गया यार, ठीक है। मेरे को सवाल भेजो, कोई मिला है तो। आउटपुट पे कैप लगा के स्लू देते हैं वो लोग मोस्टली, टीआई में तो ऐसे सवाल आते हैं कि आउटपुट पे कैप लगा होता है, आउटपुट पे आरसी सर्किट है, फिर स्लू दिया जाता है, ठीक है। वो वैसे एग्जांपल तो अपन ने क्लास नोट्स में देख लिए हैं। बाकी अगर कोई सवाल मिला है तो मेरे को सेंड करो। अपने पास सोम्य भी है ना, सोम्य भैया क्वेरी का आंसर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास 3 साल से इंडस्ट्री में काम करने वाला एनालॉग इंजीनियर भी है। सब है भाई कौन अपने अनिशा रोकने, कौन भाई, तू ही है? मैं नहीं हूँ भाई, मैं डिजाइनर नहीं हूँ ना। मेरे पीछे पड़ गया एक बंदा, बोल रहा है तुमको डिजाइन में आना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ कंपनी में क्या? नहीं, मैं जिम जाता हूँ तो वहाँ पे एक एएमडी से एक बंदा मेरे को पहचान गया, वो बोल रहा है तुम अरे कंपनी का नाम मत ले भाई। आदमी क्या है बैठेगा अपनी इसी कंपनी, एएमडी अपनी कोई इसी भी हो कंपनी सकता में बैठेगा। I have completed analog electronics, digital electronics, control system, NT, signal system. This year I got 1K rank. What should be your flow? You have already done really well. Okay, whatever the subject you are not done with, you just cover those subjects and just keep on solving the question. You have already done really well. From 1K to under 100, it is surely achievable. You are already doing very well. Okay. है। जस्ट आई थिंक Consistency रिवाइज मुश्किल है, द consistency. नहीं, उसके लिए फ्लो नहीं Yeah. बताओ उसका ना, उसको फ्लो बता देना कि रिवाइज योर प्रीवियस सब्जेक्ट्स एंड आई थिंक यू कैन गेट स्टार्टेड विद कम्युनिकेशन, राइट? उसके बाद सिग्नल हो गया, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट? वो Analog, सब्जेक्ट कुछ digital, नहीं किया। control network. Yeah, he can get started with communication system. Yes. अभी मैथ्स प्लस नेटवर्क 1 वीक से चला है। कंसिस्टेंसी पढ़ने से आई यार, और कोई मतलब कोई वे है ही नहीं इसका कि कंसिस्टेंसी कैसे आएगी। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा आपकी जिंदगी में, ये सोच लिया करो, अपने आप कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि मतलब 5 साल बाद मैं कहाँ एंड अप करूंगा, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी पढ़ने से ही आएगी, और तो कोई वे है नहीं इसका, और कोई टेक्निक नहीं है इसकी। बाकी वो अलार्म वाली टेक्निक मैंने बताई हुई है, काफी वीडियोस में बताई है कि अगर ऐसा लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है रील वगैरह स्क्रॉल करने में, तो मोबाइल में अलार्म लगा लो, 1-1.5 घंटे का अलार्म लगा के रखो कि हर 1-1.5 घंटे बाद मोबाइल बजेगा। अब जैसे ही मोबाइल बजेगा तो आपको लगेगा कि पिछला 1 घंटा वेस्ट हो गया, पिछला 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। तो उसमें मैंने क्या किया, रील स्क्रॉल की तो अगला 1.5 घंटा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अलार्म लगा लो ना, फिर वहां से कंसिस्टेंसी आ जाती है। वरना अलार्म भी इग्नोर करने लगोगे अगर मोटिवेशन नहीं है तो पढ़ने का। तो कोई टेक्निक नहीं है उसमें, बट यही वे है, इसी वे से आप अपनी कंसिस्टेंसी बना सकते हो, कोई टेक्निक है नहीं यार, ठीक है। I have completed network digital, about to complete signal 70% and started EDC. Tell me, sir, until which month should I complete the syllabus? You should complete the syllabus by 15th of January. Before that, no need to worry. And what is the next subject you need to start? You have completed network digital and signal EDC. Okay, started EDC, network signals is done. Analog you did not complete, no? So you cover analog. Analog you cover. Okay, you are from EC, you cover analog. Analog, and after that you will do communication. Okay. कौन सा चल रहा है अभी? भी यार रिपीटेड ये सारी क्वेरी, दीज आर मैग्स नोट क्लिप्स, यहाँ पे है इस वाले पे 6:32। सर एक्चुअली आई शुड हैव आस्क्ड व्हाट वुड बी माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर गेट, एवरीवन इज सेइंग लेक्चर्स, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज, रिवाइज। या दिस इज द स्ट्रेटजी। Short लॉन्ग नोट्स notes विल बी you can प्रोवाइडेड, do later शॉर्ट as नोट्स well. Short notes, yeah, you can make it on your own or you can do it later as well. Long notes, then PYQs, then revise, then test series. but you first get started. After that you will not need any strategy and all. Or if you want to know the gate preparation strategy, then simply type this particular thing and type PrepFusion in front of it, you will get a video. Okay. But once you get started in your studying, after that you will not need any strategy.
Okay. Yeah, it is almost next to impossible. Of Bangalore, no, still I would say almost few companies you can get because you're already in Bangalore. You can get in touch, but it is almost next to impossible off campus. Sir, when will you upload the control system and engineering mathematics lecture? Also, when will the paper? ये इसकी आज ही इसका शॉर्ट सुना है यार, देख लो गणेश भाई. I have uploaded a YouTube short regarding this today only. You can watch that. There has been answer. There it has been answered. I have completed network analog. ये हो ही गया. मेरी सारी क्वेरीज वापस रिपीटेड है. अब इसमें कोई ना कोई अच्छी क्वेरी मिस हो जाएगी और कुछ नहीं होगा. I'm currently EC second year. This sem we got analog electronics. This sem last time EDC was over, but I got very less subject like to just pass the semester. Can you suggest a best way to learn EDC? EDC is uploaded on YouTube only. You can cover. Analog electronics is there in my paid course. From YouTube, if you want to refer to any other playlist, you can refer that. Just study the playlist, solve the PYQs. That's it. This is the best way of covering a particular subject. Sir, most way frequency analysis and differential and op-amp started also revised calculus of real variable except integral calculus busy in cousins wedding so not able to. मतलब आशुतोष आपको इंटीग्रल कैलकुलस रिवाइज करना है अभी, ठीक है ना. नेक्स्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, वरना वेक्टर कैलकुलस फिर हो नहीं पाएगा. ठीक है, बाकी ठीक चल रहा है प्रोग्रेस, बट थोड़ा पेसअप करो. अभी अपन को काफी समय हो गया है मोस्टवेट किए हुए ना, सॉरी एनालॉग स्टार्ट किए हुए, इसको थोड़ा पेसअप करो. Learn was you can revise to gate PYQs, you can revise to test series if you don't want to revise through long notes. But long notes is the best way to go. नहीं ये बात गलत है यार, भी हम ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना. कोई किसी पे नजर नहीं लगा सकता, ठीक है. ऐसे नहीं लिखना चाहिए. मैंने इग्नोर कर दी वो सब चीजें. ऐसे नहीं लिखना चाहिए. नजर वजर ये सब चीजें ओवर रेटेड होती है भाई. ओवर रेटेड क्या मतलब, इन सब में मैं बिलीव नहीं रखता. हाँ देखो, कंसिस्टेंसी अभी खत्म हुआ ना तुम्हारा सेम, तो अभी टाइम है ना, तो अभी टाइम है बिल्डअप करने का, पेस बिल्डअप करने का. तो अभी करो, मतलब छुट्टी चल रही होगी तो इसी यही टाइम है. इसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ज्यादा टाइम दोगे. हेलो वर्ल्ड, हाँ कुछ है उनका, थोड़ा सा रहता है. it is very abstract, but that limit is there. Yeah, Anirudh, if you see how much CTC or how much salary you're getting, if you want to do better, if you want to directly jump into VLSI industry, then yes, you should prepare for it. And Nirmashri cannot comment, anything can happen. ये लगी थी. I'm able to study 8 to 9 hours per day, but I'm not able to sleep well. Any suggestion for sleep? Like I could sleep 6 to 7 hours. When I go, I sleep at 2. Yeah, 6 to 7 hours is good enough, no? नहीं मेरे लिए तो 8 सही होता है, ठीक है. मेरे भी क्यों बट स्लीप कैसे मेंटेन करनी है वो नहीं सर बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकता. मेरा भी अभी थोड़ा सा खराब चल रहा है. सी लाइक try to say to your family members or anyone, they don't disturb you during the sleeping. Like make a schedule that you will sleep at this point and you will wake up at this point. Okay, we ourselves do not follow the schedule due to certain reasons, but make a schedule, follow that, automatically that sleep will happen. Your body will maintain that cycle. Aritra Banerjee always. It depends, Aritra. So you are asking self-study or online coaching. Both. It depends on the person. Okay. If you're comfortable with self-study, you can do it. Like in YouTube, a lot of resources are there. What will be the Kakashi? You just go and go on to our website. You can get the price. Also, currently, if you see on the bottom of your screen, a special discount is running. We recently completed 40,000 subscribers. So if you apply the code 40K, you will get massive discount on all our courses. So you can apply that code. One more promo code is running, PREP. So either of these codes, you will get massive discounts. फीडबैक वाले कैप का तो वोल्टेज ऐसे भी इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता ना, ठीक है. पल्स वेव इनपुट दिया हो तो भी नहीं होता.
इंस्टेंटेनियसली तो ऐसे भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर स्लू दिया है तो स्लू के हिसाब से चेंज होगा, मतलब आउटपुट डायरेक्टली फॉलो नहीं कर पाएगा। इंस्टेंटेनियसली से की जगह आप लीनियरली लिखना चाह रहे थे मेरे ख्याल से, तो हाँ लीनियरली चेंज नहीं होगा, सही बात है, ठीक है। बाकी वीएक्स भी फिक्स नहीं रहेगा, सही बात है। हाँ, तो एनालिसिस काफी कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो मेरे ख्याल से इंस्टेंटेनियस की जगह आप लीनियरली लिखना चाह रहे थे, तो लीनियरली चेंज नहीं होगा, वो बात सही है। बाकी मैं और सोचूंगा इसके बारे में, इसके ऊपर भी सवाल बना सकते हैं। This I विजन asked to my team. Okay, one हाँ laptop and one mobile only is possible. Two laptops are not possible. I asked to my team. It is not possible. माइकल करो, मतलब कौन, you can do it, no worries. Completed control, network, digital maths, analog, some topics last year. Yeah, so as of now, you should cover these subjects only. Agya Pratap, that as of now, you are comfortable in communication and signal, sir. I have done communication signal. I am completely comfortable. But sir, I have studied control. I have studied network, digital maths, analog. But sir, I am forgetting it. So get started with it. No, I would say get started with digital and network now. So here you did not cover EMFT. So what you would be thinking, let's do EMFT now. But I would say take network and digital now, because you have already completed. You just need to get it Revise it. back into your memory, You need to right? revise it. So get started with network and digital now, and then cover it in a good manner. It should not be simultaneously. It should be after the subject is completed. Depends. It can be either the chapter is completed or the whole subject is completed. It depends from subject to subject. Okay, but not definitely not just after the lectures. इतना रिपीट कैसे हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं भाई, पता नहीं, रिपीटेड Slow क्वेरी down. ये आ रही है। Just in third year tier 3 have to take a placement, then confused about a try for PSU or VLSI. मैथमेटिक्स जहाँ तक मेरे को याद है यार, आप पिछली बार तो फर्स्ट ईयर में थे, आज आप थर्ड ईयर में हो, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है यही नेम था वो, मैथमेटिक्स, ठीक है। Jobs. पहले क्वेरी देख लेते हैं। then confused about try to PSU or VLSI, parents are forcing for government, I am worried about job security and work life. Job security, work life, every in all the domains job security is there. Work life is not that good in VLSI industry, but job security is there नहीं, in जॉब सिक्योरिटी के बारे not में ही in, बोलूंगा। आई विल कमेंट जॉब सिक्योरिटी। yeah, Look, nature can come. so if you feel like job security is like government, then no. Okay, you have to work here, you have to do the work. If you are not able to do the desired, if you're not able to get to the desired output, then your work like security, job security can be lower. It is definitely not like PSU, but if you are able to get to the desired output, it is fine. Okay, but work life, there is more pressure. Job security is little bit lower than PSU, but of course the growth here is much higher than PSU. I've seen many people who left PSU and are doing masters and then they join industry. I have seen the opposite as well. Okay, they do MTech and then they directly go to PSU. It depends. So choose one thing and then follow that. Yeah, it is important for both EC electrical. Both are at the same level, both are decent enough. In IITH, what you are getting, that depends. If you are getting VLSI, I would say prefer VLSI. Bits embedded is also very good. Okay, Bits embedded is also very good. IIT KGP में विजन मिल रहा है क्या, उसके साथ नेक्स्ट ईयर गेट देके ऐसे में हम VLSI IIT में ICS ले सकते हैं। IIT तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्टाइपेंड वगैरह रिटर्न करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि इनके लिए हाई रैंक लगेगी ना, IIT भी ICS में अगर जनरल की हो तो यार 20-25 रैंक लगेगी, ठीक है। ISC MVLSI में इंटरव्यू कॉल आ जाएगा 150 रैंक तक वहां पे, लेकिन इंटरव्यू लगेगा तो। बट IIT KGP में रह के मेरे ख्याल से इतना प्रिपेयर कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, इतना प्रिपरेशन करना मुश्किल होगा। IIT KGP का विजन ब्रांच का रिव्यू ठीक है, ठीक है ना, इसका रिव्यू ठीक मिला है मेरे को अभी तक, रिसेंटली जितना भी मिला है। ये वो थोड़ा सा सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेटेड वही वाला ब्रांच होगा मेरे ख्याल से ये, तो इसका रिव्यू ठीक ठाक मिला है। बट मैं कहूंगा कि अगर टारगेट यही है कि VLSI में जाना है, IIT बॉम्बे ICS में जाना है और ड्रॉप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ड्रॉप ले लेना। स्टाइपेंड वाला है कि सर स्टाइपेंड मिलेगा इसलिए जा रहा हूँ IIT में, तो स्टाइपेंड रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। स्टाइपेंड रिटर्न करना पड़ता है और फिर जो भी तुम्हारा एक साल का खर्चा हुआ वहाँ पे वो सब ऑब्वियसली वापस आ जाएगा। ये विजन ब्रांच क्या है सर, मैंने तो सुना नहीं है वो थोड़ा सा वो AI से रिलेटेड है, विजन एंड AI ऐसे करके कुछ नाम है, नया ही है।
ईसी के बंदों को ले रहे हैं। लास्ट ईयर किसी का 800 रैंक था, वो गया था वहाँ पे, मेरे को याद आ रहा है वही है। So resonance, being math file, not super important for placements, not super, but still you should know what is resonance. प्लेसमेंट्स के लिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट्स। या इट इज ओके निरंजन, इट इज ओके, इट इज ओके, ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके। सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये बता दिया यार कब क्या आएगा यार, ठीक है सब बता दिया है। सर प्लीज स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, आई कांट फिगर इट आउट, द फॉलोइंग कॉलेज एंड ब्रांचेस आर इन कट ऑफ रेंज, एनआईटी के केआर कम्युनिकेशन, एनआईटी सूरत। आपको कल ही रिप्लाई दिया है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, कल ही मैंने रिप्लाई दिया है एकदम रैंकिंग के हिसाब से, यही सेम कॉलेज का रैंकिंग मैंने दिया था। अब इनमें से कौन सा कॉलेज क्या है देखो, एनआईटी के केआर एंड एनआईटी दिल्ली आर हैविंग डिसेंट इनफ रिव्यूज, एनआईटी जयपुर ईसी पुअर सिनेरियो इज देयर, ओके। So all these colleges are at the same level only. I cannot comment. But जहां तक मेरे को याद है मैंने कल ही रेटिंग दी थी इन सब में, ठीक है। तो इंटरनेट पे ऑनलाइन में ये सब नहीं बोल सकता ना कि इसको ये बढ़िया है ये खराब है। एनआईटी दिल्ली और एनआईटी केकेआर के रिव्यूज ठीक है इस साल, दिस इज व्हाट आई कैन से, ठीक है। बाकी लिंक्डइन से सीनियर से पूछो कि क्या सिनेरियो चल रहा है, मेरे को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कि सर मैं एनआईटी जयपुर ईसी के एक किसी सीनियर से बात करो जो वहां पे पढ़ रहा है, और उसको बोलो कि मेरे पास ये ऑप्शन है, क्या मैं यहाँ चला जाऊँ, क्योंकि उनके दोस्त होंगे जो श्योरली दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो उनको आइडिया होगा, ठीक है ना। तो उनसे पूछो जी, रेदर देन आस्किंग मी और एनीवन ऑन द इंटरनेट, डायरेक्टली उनसे पूछो जो वहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। I gave IITH self-sound ICMP. My interview went well. Now I have MEM in bits. Prefer bits embedded. Okay, prefer bits embedded. Yeah, that's a good progress. Vector calculus, integral calculus, vector calculus, integral calculus, and a differential equation. अच्छा इंटीग्रल कैलकुलस बचा है, क्या बोल रहा है इंटीग्रल यार कैलकुलस? क्या बोल दिया, vector calculus, complex calculus, and a differential equation. Vector calculus, complex calculus, and differential equation. Complex variable, I should say. There we will cover the calculus as well. If you're forgetting it, you can go back to your notes. That is the first thing that you should do. Then you can solve the get PY equals test series. नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल और मैच कर लिया, अब मुझे किस सीक्वेंस में ई कोर करना चाहिए और मेरा एफटी वीक है तो उसको इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कोर किस सब्जेक्ट में करना चाहिए, पहले मशीन्स करना चाहिए, फिर पावर Machines, सिस्टम्स, power system, फिर power electronics कर लो। और फिर पावर ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर हाँ। ईएमएफटी, फिर मेजरमेंट, ये हम्म। सीक्वेंस रहता है। और एप्टी के लिए यार डेली थोड़ा थोड़ा एप्टी प्रैक्टिस करते रहो, मतलब सवाल लगाते रहो, टेस्ट सीरीज लगाते रहो। बहुत लोगों का एप्टी वो प्रैक्टिस एप्टी प्रैक्टिस ही जाएगा। ये वाला हो गया, प्रेफरेंस हो गया, टाइप लीनियरली, हाँ ठीक है। ये वाली भी हो गई थी गाड़ी मेरे ख्याल होगी से, ये होगी होगी ये होगी। कंट्रोल नेटवर्क डिजिटल, ये भी हो गई थी ना। गाइस क्वेरीज रिपीट मत किया करो यार। होगी इलेक्ट्रिकल। नो these are removed, okay, these topics are removed. क्या बोला, 2 year completed electrical maths ongoing मैथ्स, network signal done analog done active done. Network done, you can start with machines. You can start with मशीन्स, machine. या Don't think about full length test right now. Full and test you will give in January. Last year, December. this year you December got also. 2009 rank with 5 subjects. I took your core combo for remaining subjects and using it productively. Okay, at what month I should start full length mock test? So full length mock test we will start from January onwards. Okay, from 1st January onwards we will start, 1st or 2nd January. Okay, and keep on doing the remaining subject. Okay. आनंद जन स्टार्ट तो मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन रीच नहीं दोगे तो फिर मैं स्टार्ट कैसे करूंगा तब। 4 व्यूज पे स्टार्ट कर देंगे आपने, 4 व्यूज पे नहीं कर सकते ना स्टार्ट। आप बताओ आपने कितना पढ़ा है नेटवर्क एनालिसिस, मेरे को पता है नहीं पढ़ा अभी आपने, ठीक है, नहीं पढ़ा है, पता है मेरे को काफी ज्यादा। कि फिर सिग्नल सिस्टम स्टार्ट कर देंगे ना तो वो भी आपको लेंथी लगेगा, सिग्नल सिस्टम तो और लेंथी, नेटवर्क से और लेंथी लगेगा वो, ठीक है। सिग्नल सिस्टम के जो मतलब जिनको खराब रिव्यू देने होते हैं ना मेरे कोर्स के, वो एक ही रिव्यू दे सकते हैं कि सर लेंथी है, उनके पास और कुछ तो है नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि सर कॉन्सेप्चुअली चीजें बताई नहीं,
कॉन्सेप्ट तो इतने बता दिए कि उनको 4 जिंदगी में 4 कोर्सेज में नहीं मिलेंगे, तो कोई कह नहीं सकता कि कॉन्सेप्चुअली क्या कोई कहीं दिक्कत है। तो हमारे कोर्सेज में एक ही रिव्यू आता है नेगेटिव कि लेंदी है, तो वो लेंदी तो होगा ही भाई, उसी से रैंक आती है। वरना शॉर्ट कोर्सेज पढ़ गई किसकी रैंक आती है? जो बहुत इंटेलिजेंट होता है उसकी आती है, ठीक है। और अपने वहाँ वो 1% बंदे की तरफ देख रहे होते हैं कि सर 1% बंदा ना क्रैश कोर्सेज पढ़ के ले आया, 99% बंदे नहीं लेके आए ना क्रैश कोर्सेज पढ़ के, छोटे छोटे कोर्सेज पढ़ के 99% बंदों की रैंक नहीं आई, 1% की आ गई तो आ गई, देवर इंटेलिजेंट तो उनकी आ गई। तो रैंक ना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज पढ़ के ही आती है, ठीक है। वरना क्रैश कोर्सेज करवाने हो ना बहुत आराम से करवा सकते हैं, टॉपिक उड़ा दो 4-5, जल्दी जल्दी बता दो उनको, फॉर्मूला बेस्ड पढ़ा दो, उससे आती नहीं ना। और अगर अच्छे से करवाना है सिग्नल सिस्टम, जैसे मान लो कि नेक्स्ट ईयर में करवाऊंगा सिग्नल सिस्टम हिंदी में, तो मेरे को 3-4 महीने लगेंगे बढ़िया से, मतलब 3-4 महीने लगेंगे करवाने में। ऑल्दो मैं इंग्लिश में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट वगैरह सब पता है, लेकिन उसमें 3-4 महीने लगेंगे ही करवाने में, अगर बढ़िया से करवाना है तो, ठीक है। तो वो मोटिवेशन तभी आएगा ना जब रीच दोगे, ठीक है। व्यूज नहीं आएंगे, आप हम देखेंगे कि क्रैश कोर्स में ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो फिर हम क्यों कॉम्प्रिहेंसिवली करवाने का सोचेंगे, उसको पेड में रखेंगे। तो अभी जो नेटवर्क एनालिसिस का प्लेलिस्ट है वो बाई फार, मतलब आप उसे खराब बोल सकते हो, बट कभी कंपेयर मत करना। अगर किसी ने, मैं अगर कभी कंपैरिजन देखता हूँ कि ये सर वो वाली प्लेलिस्ट है ना, उसके कंपैरिजन में बढ़िया है, तो वो हमको पता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया भी नहीं। तो कंपेरेबल नहीं, खराब बोल सकते हो, वी विल एक्सेप्ट इट, कि खराब है, लेंदी है, वो सब है, वी विल एक्सेप्ट इट, बट नेवर एवर कंपैरिजन, नेवर एवर एक्सेप्टेबल, नेवर एवर, ठीक है। तो उन सब में टाइम लगता है, तो आप लोग रीच दोगे तभी जाके मोटिवेशन आएगा। अभी पूरा एनालॉग करवाने का प्लान है हमारा यूट्यूब पे, एकदम जीरो से, एकदम करवा के, एकदम जीरो से फुल पूरा एनालॉग करवाने का प्लान है। अब वो प्लान तभी सक्सेसफुल होगा ना जब आप लोग रीच दोगे। इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, मैथ्स का चल रहा है, ठीक है, व्यूज तो कितने ही आते हैं। बाकी मैं वहां देखता हूँ 2 इंटीग्रल करवा दिए, ठीक है, 2 इंटीग्रल करवा दिए, dy बाई dx, एक स्ट्रिप ले ली, हो गया इंटीग्रल कैलकुलस। इसका मतलब होता है इंटीग्रल कैलकुलस। किसी ने इंटीग्रल कैलकुलस यहाँ से पढ़ा तो एक बार बताओ क्या मतलब होता है इंटीग्रल कैलकुलस का, आपको समझ में आया हो तो, किसी ने पढ़ा हो तो एक बार। कर्व सरफेस एरिया कैसे लिया जाता है, कौन सा सरफेस एरिया कैसे लेना है, कैसे स्ट्रिप लेनी है, अगर 3 डायमेंशन में डील करें तो कैसे डील करना है। अगर किसी ने यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा है तो रिव्यू देके बताओ, बाकी फिर क्या बताएं। और तो बाकी फिर क्रैश कोर्स भी रीच आती है, लास्ट में मैं वीडियोस अपलोड करूंगा ना, उस पर 20-20 हजार व्यू जाएंगे, देखना। उसमें वन शॉट में करवाऊंगा, 20-20 हजार व्यू जाएंगे, और उसमें मेरे को पता है उस 20 हजार में से 10 हजार बंदों की रैंक भी नहीं आएगी। 20 हजार में से 10 हजार, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब 19 हजार बंदों की रैंक नहीं आएगी अच्छी, जो 20 हजार हाश लोग ये देख है रहे हैं कि उसे। मतलब कुछ लोगों को लग सकता है ये हार कि ये ऐसा है, लेकिन ये दिस इज द ट्रूथ, ये ट्रूथ है। पिछले साल आरबीआई की सीरीज मतलब ऑलमोस्ट वो 10K उनके व्यूज क्रॉस कर गया था। तो सब पे 10 के व्यूज, 20 के व्यूज, कोई सेंस नहीं है। मतलब उससे मतलब रिवीजन हो सकता है बढ़िया से, हो सकता है 1-2 सवाल भिड़ भी जाए, लेकिन आप वही उसको मान रहे हो ना कि मैं यही पढ़ के चला जाऊंगा तो एग्जाम में कुछ नहीं होगा। 7 से 8 कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट करो। अब कोई कह रहा है कि सर आप करवा क्यों रहे हो फिर वो, अगर उससे रैंक नहीं आती, तो वो इसलिए करवा रहे हैं कि 7 से 8 किसी ने कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिए सब्जेक्ट, उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट बचे हैं किसी के, अब वो उसने कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं किए हैं, तो वो क्या करेगा, उनको देख लेगा, तो उसमें से वो 2 से 3 सब्जेक्ट जो बचे हैं उसके, वो आएंगे 20-25 नंबर के, तो उस 20-25 में से वो 5-6 नंबर लेके आ सकता है आराम से, उतना कंटेंट फॉलो करके। 5-6 या हो सकता है 7-8-10 भी नंबर ले आए। पिछली बार तो 10-12 नंबर के सवाल बैठ गए थे, ठीक है। तो इतने नंबर वो ला सकता है, इसलिए वो करवाए जाते हैं, बात खत्म हुई। तो ऐसा नहीं कि वो वहीं से पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, 6-7 सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली करने ही पड़ेंगे एटलीस्ट, तभी रैंक आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। ये बॉटम लाइन है, यही एक सैड रियलिटी है। ठीक है, you can start. We have a Titans batch for 2028. You can watch the orientation video. You can get all the information from there. Uh, Dipanjan, get back to your proper health and then you restart your preparation. That's it. Like once you're properly healthy, you restart your preparation. EDC. Uh, EDC first, then on to. Uh, ठीक है, there is no issue. I think It's fine, it's it's fine, it's fine. fine, there is no issue, Okay. मतलब no analog के लिए issue. EDC is not required, to be honest. Anyways, It is not required, but if you have the knowledge, there is no issue about it. no issue. EDC Okay, you no can issue. complete before and as well. It's just that analog is more important for gate EC people than EDC. That's why I prefer analog first than EDC. But if someone wants to do EDC first, then it is absolutely fine, no issue. Completed second year. I'm going to embedded. 7:05 ओ अच्छा करना है। आई थिंक ठीक है, मैंने I will suggest to prepare for GATE. Okay, off campus would be very difficult. Although I myself don't have much idea about embedded world, but I think it is difficult.
Also, just now I have uploaded a video on a GATE 2027 roadmap. Okay, 200 days are left. So how you can cover the syllabus? So you can watch that video. Okay. बाप रे बाप, सेमेस्टर के बहुत लिए यार सिग्नल सिस्टम में आप बहुत से प्लेलिस्ट है, वो नेजो एकेडमी की प्लेलिस्ट है सेमेस्टर के लिए, वहां से देख लो। सेमेस्टर के लिए हमारा कंटेंट फॉलो मत किया करो यार, ठीक है? फिर उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, उतना रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है ना? So I guess I know I have missed some queries. I'm really sorry for that. लेकिन But आज we need करना to पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा आज। yeah, we will have to end the session. Already it's been 1 hour. Already it's been 1 hour, so we will end the session now. Okay, guys. Yeah. So if your query is missed, you can write down in the comment section. I will try to answer. Okay then. Yeah, okay, thank you. Yeah. Thank you.